भाई अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुई है बाइक, मतलब आप समझ रहे हो ये सीधे कैरी करी गई है और ये ऐसी की ऐसी खड़ी है। फॉर मी इट्स लाइक रॉयल एनफील्ड, देयर इज अ वर्जन ऑफ रॉयल एनफील्ड विच लुक लाइक दिस बाइक। बहुत अभिनंदन है दोस्तों आपका फिर से चैनल में। मेरा नाम दिवाकर है और मैं आज फिर से मिस्टर हिंदी के साथ हूँ और मैं आज उनके बाइक के शोरूम में हूँ जहाँ पे मैं इरानियन बाइक्स को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, यानी देख रहा हूँ कि इरानियन बाइक्स अपने इंडियन बाइक से कितनी ज़्यादा अलग हैं। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा वैरायटी है और मेरे साथ जिनका ये शोरूम है वो भी हैं जो ओनर हैं। तो मेरे साथ साजरा हैं, साजरा बहुत ही यंग हैं और इन्हीं का शोरूम है और पीछे आप इनके देख रहे हैं वो बाइक है, वो ऑफ रोड बाइक है। तो साजरा को इंग्लिश आती है, ये बहुत अच्छी बात है। दैट यू नो इंग्लिश इज़ वेरी गुड थिंग फॉर मी। एंड फ्रॉम इंडिया नमस्ते। Namaste. नमस्ते। What is namaste? सलाम। You mean hello, salam. सो साजरा बहुत ही यंग है और मेरे साथ Namaste everyone. How can I say everyone? सभी को Sabiko. Namaste Sabiko. और मेरे साथ हैं मेरे प्यारे दोस्त, मेरे अजीज़ मित्र, मेरे अजीज़ दोस्त मिस्टर हिंदी। और अभी साजरा से बहुत अच्छी बात हुई है, उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है हैमदान के बारे में, बाइक्स के बारे में, और उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हैं। आई से दैट साजरा हैज़ वेरी मच नॉलेज about Hamadan, about bikes, and the things you said me, the things you tell me, that's very much helpful for me, like the tribes and all that. Okay. So अब मैं बाइक्स को एक्सप्लोर करने वाला हूँ और साजरा मुझे बताएंगे इरानियन बाइक्स। दिस इज़ इरानियन कंपनी और चाइनीज़ कंपनी? No, it's a Chinese company. Chinese company, Billonaire. Chinese company, yeah. So yeah. It has the license of Italy, I think. I hear, but it's a Chinese company. It's a Chinese company. We don't have like 100% irani. Okay, it's like motorcycle. the plant is in Iran. Yeah, they Manufacturing. Yeah, they are assembled this motorcycles in Iran, but they're all from China. Okay. So we start from here, right? We start from this bike. What? We begin from this bike. Yeah. Benelli 150 cc and nice city motorcycle. Like a city motorcycle. Like it's for इसका मतलब है कि ये मतलब जैसे अपने यहाँ स्प्लेंडर है ना, ऐसे ही ये है। You know about स्प्लेंडर? हीरो होंडा It's a bike. Indian company. Yeah, Honda. Honda. Yeah, Hero. we have Honda. Yeah, Honda and Hero was together, but now they are separated. You know, now Hero is separated and Honda is separated. I don't know much. So ये है जो normal bikes है. This is old face. This is new face. Yeah, we have. This is the same thing. This same. Same thing. We have Leo Chino here. Yeah, I love this bike. What is name? Leo Chino. It's an off-road bike. No, it's we can call this kind of bikes what to say? It's cuff racer. Okay, cuff racer. It's a street bike. You can use in off-road, not much. Hello. For me, it's like Royal Enfield. There is a version of Royal Enfield which look like this bike. Okay, so okay, we go to next. We have a street bike. They are all bad. This is an adventure bike. Yeah, this is off-road bike. Yeah, I like that. Good bike. Yeah. I don't suggest it for off-road very much, but it's for adventure basically because it has that kind of accessories which we can put it there. It's for traveling or adventure. Yeah. And do you want to see something very special? Yeah, of course I want. Not just in Iran, in the world. What is that? You want to see? Yeah. Let's go. So अभी वो मेरे को कहीं ले जा रहे हैं, वो कह रहे हैं बहुत ज़्यादा स्पेशल थिंग है, ईरान में नहीं वर्ल्ड में भी। So okay. So goodbye for now. Okay.
तो अभी हम जाते हैं और देखते हैं क्या है। और यही शादरा के एक शोरूम की ये कुछ चाइनीज़ बाइक्स हैं जो कि वो कहते हैं कि ये ज़्यादा अच्छी नहीं है, मतलब क्वालिटी नहीं है। वो आपको सबको पता है कि चाइनीज़ की क्वालिटी। तो ये देखिए सब वही है और ये शादरा का ही शोरूम है। तो भाई जिस चीज़ के बारे में मेरे से शादरा बात कर रहे थे और कह रहे थे कि दुनिया की वो सबसे नायाब चीज़ है ईरान में तो वो कुछ ही है और बहुत ही नायाब है, तो वो मुझे दिखाने के लिए लेके आए हैं और वो है ये बाइक कावासाकी। बहुत ही ज़्यादा मशहूर बाइक, रेसर्स की बाइक और इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है Kawasaki. I said this is very much famous in India and lots of boys have a crush on that. This is Kawasaki H2R. We don't have very much like this in the world. You can see carbon fiber all around here. Yeah. And yeah, this is we have a red thing. This is a turbocharger. Okay. What is that? A turbocharger. 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 Yeah. Okay. Wow. It can have like 300 kilometers per hour speed. 300 kilometers per hour. 300 kilometers. Yeah, in the normal side. Yeah. Okay. And if you have a nice road, it can goes from 400. 400 kilometers. Yeah, of course it's very good. Yeah. And what is the cost of this in Iran? In Iran, it is 15 billion. 15 billion tomorrow. 15 billion pounds. So like something like $50,000. no, more. More? More, yeah. भाई मैंने पहली बार ईरान के अंदर ही इतनी ज़्यादा तगड़ी बाइक देखी है और वो तो मिस्टर हिंदी की ये कृपा रही है। ये मिस्टर हिंदी की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। और ये निंजा H2R है। जो बाइक रेसर्स हैं यार वो सब उनको पता है, मुझे खैर इतनी नॉलेज नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन मेरे को देखने में बहुत अच्छी लगती है। बाइक का बहुत ज़्यादा शौक है मुझे भी। तो ये $50,000 से भी ज़्यादा इसकी कॉस्ट है। 300,000. $300,000. ओके I don't have good man. Here we have sleek tires. Yeah. They are when they get heated. Yeah. Hot. They burn? Yeah. They burn up? They stick like a glue Oh. in the ground. On the ground, okay? वाह। जिसके बारे में शादरा बात कर रहे थे और बहुत ही, और पहली बात ही इज़ अ रिच मैन। It's 0 kilometers. Pick up. We don't start it, okay? Okay. It's completely new. We don't start. Oh, it's completely new. Wow. It don't have battery in it, okay? Oh. And yeah, this make it special. This? No, that we don't start it. Oh yeah. So it's like it's untouchable. बाइक भाई अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुई है बाइक, मतलब आप समझ रहे हो ये सीधे कैरी करी गई है और ये ऐसी की ऐसी खड़ी है। शायद इसको इज़ देयर एनी बायर इन हैमदान हु कैन बाय दिस? Many people. Yeah. मैंने पीपल Many. मतलब खरीद सकते हैं लोग, लेकिन खरीदते नहीं है क्योंकि इवन आई डोंट सी एनी सुपर बाइक इन हैमदान टिल नाउ। Okay, in Iran, you can't ride a bike more than 250 cc. Ah. Yeah, it's illegal. Oh no. And these are for special trucks. Okay. Oh, these are for special track. So भाई मतलब इसका होना ना होना बराबर है। शोर मतलब एक तरीके से दिस बाइक इज़ जस्ट फॉर एग्जीबिशन। Just for it. जस्ट फॉर एग्जीबिशन है। और इस बाइक का ये है कि यार यहाँ पे 200-250 किलोमीटर से ज़्यादा जो है स्पीड इलीगल है, इसीलिए शायद। You want to see the back? Yeah.
Oh my god, wow. Wow. Can you just hold it? So भाई यही जो चीज़ है मतलब ईरान में मैंने पहली बार देखा है और बहुत ही खूबसूरत है. शादरा मुझे लेके आए हैं, बहुत सुंदर. शुक्रिया. Thanks a lot. Mercy. That you show me that kind of amazing thing. You're welcome. And he had, I think you had 3 showrooms or 4 showrooms here? We have like just this is the Moto Asia holding. It have like 10 showrooms just in Havana. That you have, you own it? Yeah, 8 showrooms in Tehran, 1 showroom in Tabriz, and showrooms in Iraq. Yeah, since now. These all are yours, man? Or these are franchises? No, these are from my family. Oh, your family business. My father and my mother. Amir, Khail Rais.